गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े किससे पढ़े। Unacademy brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions. आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की। हो जा तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off. Good evening everybody. Welcome to this session of crash course on network analysis. Welcome to Unacademy. Welcome to my crash course of network analysis, guys. So first of all, a very happy Christmas to all of you. I hope you enjoyed your day. Let's continue our study on network analysis. So कल क्लास में हमने क्या डिस्कस किया सर? नेटवर्क थ्योरम्स डिस्कस किया, थ्योरम्स के बारे में सारे प्रॉब्लम्स किया, हो गया थ्योरम्स का काम। आज तो क्या करेगा सर? आज तो शुरू करेगा टू पोर्ट नेटवर्क्स। टू पोर्ट नेटवर्क्स, ओके, लेट्स स्टार्ट। So this is about me, this is my profile, this is Bhima Shankar. I did my MTech from IIT Kharagpur. I have around 10 years of teaching experience in GATE and ESE, expertise with the subjects of digital circuits and network analysis. In the last 10 years, I taught to several thousands of students, all corners of the country, in almost all top institutes of the country. So I am very happy to share my knowledge through this platform to all of you guys. So this is my profile name in Unacademy. So in Unacademy now today, today I want to give you an announcement. Today 9 PM, so just profile में follow करो, you will get the update. 9 PM I'm starting one free pre-YQ series, that is previous year question series of network analysis questions. So 2020 paper and 2019 का पेपर सॉल्व करेगा। आप लोग आना चाहिए थे 9 PM Unacademy ऐप पे लाइव आ सकते। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। सो इफ़ यू फॉलो माई प्रोफाइल इन Unacademy, you will be getting all these notification of the free classes. So if you want to take Unacademy Plus subscription, सर ये प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? प्लस सब्सक्रिप्शन इज हैविंग लिटिल मोर एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस सर? If you download Unacademy learning app and watch the classes, then you will feel the difference between the YouTube class and Unacademy learning app class, where you have the live interactive environment. You can participate in the polls and your learning will be more enhanced. And you will be having there, if you take plus subscription, you will be having regular live classes, unlimited access to the classes, that is whether you want to watch it in recorded, old ones, new one and current one, without any restriction. You can watch any lecture of any time, any number of times. You will have multiple batches in Unacademy, rank improvement, crash, and so many new initiatives are coming for the plus subscribers. All are free once you join Unacademy plus subscription. You have two languages, English and Hindi.
you will be having a regular doubt clearing session, that is after every 3 session, one session is completely dedicated for doubts only, and unlimited test series, so that is previous year questions, subject wise tests, weekly test, monthly test, total test series of the Kreatryx is free for Unacademy plus subscribed students. So itna sari benefits hai plus subscription पे. If you go for iconic subscription, you have extra edge with the personalized digital coach who will take care of you personalized way, and study planner will be provided by the personalized digital coach, and study booster sessions conducted by your coach, and you will be having personalized exam analysis who will perform your performance analysis and guide you to reach your destination in a best possible way. That is what we call iconic subscription. If you want to see the price details for plus subscription and iconic subscription, for plus subscription these are the price details. Okay, so for 1, 3, 6, 12, 18 and 34 months, I suggest you to go for 12, 18, 34. If you are a third year student, go for 18 months. Second year student, you can go for 24 months subscription, guys. So you can use my coupon code Shankar10, which will give you 10% discount on your plus subscription, guys. And also it will show you like my class and you are joining an academy using my code. That is that can show you are following me, or if you like me, you can use my coupon code. It is for total GATE and ESE subscription, not for only my classes. It is for total GATE and ESE subscription. If you take 1 year after my code discount, you get 25. Originally it is 30,500. Here it is 38,500. But after discount you get for 34,650. It is 44. After discount you will get for 39,600. Right? So iconic subscription, these are the prices, 50,000 and 74,000. If you apply the coupon code, you will get for 45,000 and 66,600. So both the cases you will be getting 10% extra discount. So let's move to today's session, that is two-port networks. So two-port networks discuss karega abhi. So what is the meaning of port? Please comment. What is the meaning of port? Port का meaning क्या होता है बताओ. Hi Omkar, good evening Sid, Saddam, Gagan, Siddharth, Gaurav, everybody good evening. Okay. So please listen. Tell me guys, what is the meaning of port? Port का मतलब क्या होता है sir? Port is nothing but you can see airport. Airport में क्या होता है sir? That is where you will enter and exit to your city. Okay, seaport, whatever may be. So port is nothing but a pair of terminals. Port is nothing but a pair of terminals. Two-port network का मतलब क्या होता है sir? Two pair of terminals. Sir, what is the use of this two-port network? This is the third chapter we are discussing, right? Basics, network theorems, then two-port, right? What are the general two-port networks available for you? Most commonly, you comment real time, real life, or your network examples of two-port networks. Please give your comments. Whatever the two-port networks you have come across, please comment them. A very happy Christmas, Chinna. Thank you. Yes, give your example. Surface transformer, right answer. Primary, secondary, two pair of terminals, two-port network. Any other? Any other? Transmission line, good. Any other? Any other? Transformer, transmission line, true. Op amp, okay. Transistor, okay. Common emitter, common base, common collector में 2 is input, 2 is the output. Okay. So okay sir, all these are two-port networks. First fundamental thing, generally people will miss, they will study two-port networks. Z parameter होता है sir, Y parameter होता है, H, G, everything they will study. But why they are studying, they don't know. So मैं explain करेगा two-port network का utility क्या होता है सर. सर two-port network का utility क्या होता है सर? हमारा network analysis में हमारा पास network नहीं, network complex networks को draw करना नहीं चाहिए.
अगर इसका पैरामीटर्स आपके पास है तो इफ यू आर हैविंग द पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क अवेलेबल विथ यू, you can use them to find the response of the network like voltage gain, current gain, input impedance, output impedance. To evaluate these responses of any network, even your physical network is not available with you, if you know the parameters, that is sufficient to analyze it. Best example, transistor. In your lab you might be using H parameters. By using H parameters, you will be using finding transistor, what we call amplifier, voltage gain, current gain, input impedance, output impedance, all those things. Right. See here, it is the example of the two-port network. It has a two pair of terminals, input voltage, input current, output voltage, output current. How many variables are there with me, sir? V1, V2, I1, I2, 4 variables. Out of these 4 variables, I will select 2 variables as independent, 2 variables as dependent. That is, I express any 2 variables in terms of other 2. That is mera V1, V2 in terms of I1, I2, or I1, I2 in terms of V1, V2, V1, I1 in terms of V2, I2. Like that, any 2 in terms of other 2, if you express it, it is called as two-port network parameters. ऐसा कितना पैरामीटर्स आर टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स आर पॉसिबल? 4 में 2 सेलेक्ट करना चाहिए तो 6 चाहिए ना, 6 होता है ना, 6 डिफरेंट पैरामीटर्स आर पॉसिबल. वो 6 डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होता है सर? Z, Y, T, T dash. These are the different two port network parameters available with you. That is Z, Y, T dash, H, G. Okay. Now you understand na, some interview में they can ask you how many two port network parameters are available बेटा? मेरा पास 6 पैरामीटर अवेलेबल है सर. 6 क्यों? आउट ऑफ द 4 वेरिएबल्स मैंने 2 वेरिएबल्स लेना चाहिए इंडिपेंडेंट, 2 लेना चाहिए डिपेंडेंट. 4C2 कितना होता है सर? 6 डिफरेंट पैरामीटर्स मिलेगा सर. वो बताओ क्या है ये 6? Z, Y, T, T dash, H, G. आपका कॉन्फिडेंस अच्छी से हो गया. इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, डू यू नो S पैरामीटर्स, स्कैटरिंग पैरामीटर्स? यस आई नो. EMTL में क्वेश्चन भी आया 2020 गेट पे. ठीक है. स्कैटरिंग पैरामीटर्स आर डिफाइंड फॉर विच काइंड ऑफ नेटवर्क्स? टू पोर्ट नेटवर्क लाइक ट्रांसमिशन लाइन. देन यू सेड ओनली 6 आर पॉसिबल सर. 7th वन कहाँ से आया सर? लॉक हो गया यू कर क्वेश्चन. यू सेड ओनली 6 आर पॉसिबल, Z, Y, T, T dash, H and G. बट 7th वन यस कहाँ से आया? Yes कहाँ से आया? What about the S parameters? You can define that for the transmission line which is a two-port network. If only these 6 are possible, how that comes? अगर subject change हुआ तो ऐसा आएगा क्या? What is the logic behind that? Anybody comment? Yes. Anybody comment please? अरे हाई लो फ्रीक्वेंसी से कुछ नहीं होता है. लिसन, हमारा वेरिएबल्स आर V1, V2, I1, I2 इन द नेटवर्क. ये 4 वेरिएबल्स ले लिया तो आपको ये 6 पैरामीटर्स मिलेगा. अगर आपका वेरिएबल चेंज हुआ तो इफ यू रिमेंबर योर एस पैरामीटर्स में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट VSW और एटसेट्रा आएगा ना, इसका मतलब रूट ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर बाय इंसिडेंट पावर. दैट इज देयर आपका वेरिएबल डिफरेंट है. रूट ऑफ पावर इज द वेरिएबल. इफ यू टेक डिफरेंट वेरिएबल्स डेफिनेटली डिफरेंट पैरामीटर्स आर पॉसिबल. बट हमारा नेटवर्क के बारे में हमारा वेरिएबल्स क्या है सर? V1, V2, I1, I2. वो 4 यूज किया तो only these 6 are possible. अगर if you use a different variable, definitely different parameters like S parameters are possible. Okay, but in networks point of view we discuss only these 6. ठीक है, चलो. सो किसी भी नेटवर्क ले लो, टू पोर्ट नेटवर्क, इसको 2 मेथड पे क्लासिफाई करेगा. कैसा सर? रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. सो कैसा क्लासिफाई करेगा सर? रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल, सिमेट्रिकल एंड asymmetrical. Okay, right. Now listen here. It's not for distributive. Actually distributive को हम lumped से approximate करके calculations करेगा. Okay. In distributive also it will help. See here firstly. Now, so just a minute.
सी हियर, पहले वाला डेफिनेशन क्या होता है सर, रेसिप्रोकल नेटवर्क। रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है सर, अगर किसी भी नेटवर्क रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई किया तो इसको क्या कहते हैं सर, रेसिप्रोकल नेटवर्क। सर रेसिप्रोसिटी थ्योरम कब सेटिस्फाई होता है सर, network made of linear passive bilateral networks, any resistive inductive capacitive networks, all these networks are reciprocal networks only. Symmetrical network क्या होता है सर, if the network offers same impedance, network is said to be symmetrical if the network offers same impedance from both input and output ports, दोनों साइड से अगर सेम impedance ऑफर किया तो इसको क्या कहते हैं सर, symmetrical network. There is another way to say symmetrical network is, अगर नेटवर्क दोनों साइड से लुक्स आइडेंटिकल, इफ आई सी फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड में तो सेम दिख रहा है तो मुझको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, दैट इज सेम विद द नेटवर्क ऑल्सो, इफ द नेटवर्क लुक्स सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स इट इज सिमेट्रिकल. Similarly, if you divide the network into two equal halves, one is a mirror image of other, so आपका फेस पे ऐसा एक मार्क करो, forget about your hairstyle, okay, if this is the mirror image of this one, you can say it is called symmetrical network. Last two वाला condition sufficient है, necessary नहीं है, but necessary condition क्या होता है सर, even it not looks same, what is the condition required, दोनों साइड से impedance same दिया तो it is called as a symmetrical network. समझ हो गया ना basic definition of reciprocal and symmetrical. चलो, so if you take this example, it's a resistive network. Irrespective of values, any resistive network is reciprocal. But is it offering same impedance from both the sides, sir? नहीं, asymmetrical. But if it offers same from both the sides, it is symmetrical. You can see that one का जगह पे you can have two parallel with two. It is not compulsory to look same from both the sides. Or you can divide this network into two parts. It's a mirror image, bisection we call. It is the symmetrical. Suppose you take op amp example. Op amp का equivalent ऐसा होता है ना. This is an example of non-reciprocal asymmetrical. Okay. Reciprocal का मतलब simple resistive और linear passive bilateral वाला networks. Network made of resistors, inductors, capacitors. Okay. Right. चलो. See here, dependent source that we cannot comment. Satish, just wait for the end of the class. You will get that clarity. Okay, it is not true every time, Satish, but what we can say is if the network is made of resistors, inductor, capacitor, compulsory reciprocal. Otherwise, we should check it. How to check? Check the ratio of response to excitation is the same or different. Okay, next. So see here, these are the different two-port network parameters. So let's discuss one by one. पहले क्या होता है सर, Z parameters. Z parameters को क्या कहते हैं सर, open circuit impedance parameters also. We call Z parameters as open circuit impedance parameters also. So what are the, why it is called open circuit impedance parameters, मैं तो explain करेगा. चलो here I will take V1 V2. I will express V1 V2 in terms of I1 and I2. इसका मतलब क्या सर, मेरा V1 V2 तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है सर, I1 I2 तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट. If V1 V2 is expressed in terms of I1 I2, it is called Z parameters. Why it is called Z parameters? Because what is Z11 here? It is V1 by I1 when I2 equal to 0. अगर कुछ करंट 0 है तो it will give you voltage current ratio. इसको क्या कहते हैं, impedance. V by ratio ना, impedance. When I2 is 0, that is when some current is 0. That's why it is called open circuit impedance parameters. Open circuit impedance parameters. Here, if your Z12 equal to Z21, इसको क्या कहते हैं, reciprocal. This is how you test the reciprocity. That is Z12 का मतलब V1 by I2 equal to V2 by I1. इसका दूसरा नाम भी है ट्रांसफर इम्पिडेंस. ठीक है, अगर सिमेट्रिकल का मतलब V1 by I1 equal to V2 by I2, Z11 equal to Z22. That is how you can check the symmetry. You can write these equations in the matrix form like this. If you take its inverse, आपको क्या मिलेगा, Y parameters are short circuit admittance parameters. Y parameters क्या होता है सर, I1 I2 in terms of V1 V2. What is Y11 here sir?
I1 by V1 at V2 equal to 0. That is when the voltage is equal to 0. That is when your output is short circuited, it will give you current to voltage ratio. That's why it is called admittance parameters. Just inverse of this. Relations are same. Here I1, I2 are the any kind of doubts you can ask. I think thoda sa buffer ho gaya. Don't worry. Mahesh, have you attended yesterday class? Please tell me that. Up to the end of the class, are you there in the class? Remaining students, if you have any queries, please ask. If you are not coming every single class, please don't ask any doubt. Come to see every single class, then only you have the right to ask the doubt. I am sorry to say this. Okay? We have discussed what is reciprocity, everything yesterday. Don't think that whenever you come, then only subject will be discussed. Okay? Please come to every single class, then ask. Then there will be some validity for you. Okay? Yesterday class only I have discussed the reciprocity theorem. Chalo. Next. So this is the problem with most of the people in YouTube, guys. In the plus, whenever I see, most of the people are very sincere because they paid some amount, so they will be very sincere. Here you are getting everything for free, so you will be having the attitude, come whenever you are free and come and sit in the class. Don't do that. I also already told so many things. When you are studying, you feel like you are coming to a temple. Sit sincerely every single class, then only you will be able to learn. Don't think anyway it is free, we can come whenever we are feeling free. Don't think like that. Every single class is important because it matters for me whether you learn from me or not. I am not just giving you content and I will be leaving you. Okay, I want you people to be developed. Okay, I want you people to be sincere. I want you people to be achieving some success, not just coming to the class, giving the class and go. That's why I want to teach you, go sincerely to every single class. Please attend with discipline and sincerity. When you attend any course, do this. Okay, so chalo. Next one, ABCD parameters. ABCD are transmission parameters. ABCD are the transmission parameters. क्या होता है sir? These are the only parameters which will relate complete input port with the complete output port. That is V1, I1 with V2, I2. Here, these are mostly used to analyze the transmission lines sending end and receiving end voltage current relation के लिए. So, in the reciprocal network, हमेशा ये वाला condition satisfy होता है sir. AD minus BC will be equal to 1. Symmetrical में हमेशा A equal to D होता है. ये आपको याद में होना चाहिए compulsory. You should compulsory remember these things, guys. Okay. So here minus क्यों आया sir इस पे? Please listen. If you see here this network, two port में generally what is the notation we followed in the first slide? You see, both the I1 and I2 are entering. Yes or no? So all our notations are with respect to entering currents only. Here a minus I2 का मतलब is just it is representing the load current. Okay, that is the meaning of minus I2 here. Its inverse will give you T dash parameters. Its inverse will give you T dash parameters. Next, H parameters, very important. Hybrid parameters we call. Hybrid parameters क्या होता है sir? Here we take input voltage and output current. इसलिए इसको कहते हैं hybrid parameters. Okay. So here H11 is, what is H11? It is V1 by I1. It is input impedance when V2 is 0. It is not original input impedance. It will help you to find the input impedance because what is H11 is V1 by I1 when V2 is 0. That is when the output is short circuited. It is not originally input impedance. It is the impedance when output is shorted. To get the input original impedance, we can use this H parameters. It will help. Okay, next. What is H12? It is the reverse voltage gain when input is open. What is the H21? Current gain when output is shorted. V2 is 0. Lastly, H22 is output admittance when input current is 0.
So that is the H parameters which you see its importance in when you study your transistor analysis etc. Reciprocal network में हमेशा H12 minus H21 होता है सर. Symmetrical network में determinant हमेशा 1 होता है सर. What is G parameter sir? Inverse. You should take I1 here, V2 here. सर इतना सारे formulas सर कैसा याद करना? मैं तो एक टेक्निक देता हूँ आपके लिए. ज़्यादा याद करना नहीं चाहिए. Z का मतलब क्या सर? V by रेशियो. सो इसमें V आएगा, इस पे I आएगा. Y का मतलब I by V रेशियो और इसका इन्वर्स Y पे आएगा. हो गया सर. Z तो याद करना नहीं चाहिए सर. नेक्स्ट ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का याद करना क्या कैसा सर? इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट. सिंपल. दैट इज V1 I1 with respect to V2 I2. If you remember this, it will be obvious to V2 I2. हो गया सर. इसका इन्वर्स नीचे आएगा. H पैरामीटर को कैसे याद करना? हाइब्रिड बाय हाइब्रिड का मतलब it is not input voltage input current or input voltage output voltage, it is input voltage and output current का combination. This is how you should remember. हाइब्रिड इनपुट का वोल्टेज आउटपुट का करंट आएगा यहीं पे, वापस यहीं पे आएगा. दिस इज वन मेथड. नहीं है तो H11 is always impedance format. Remember like that. So V1 and I1 will come here. Okay, remember one part of it. Remaining automatically इसका inverse यहीं पे आएगा. So no need to remember much. Just simple points. Z का मतलब याद रखो. ट्रांसमिशन का मतलब complete input and complete output. Hybrid का मतलब input voltage output current. So this will give you the relation between various two-port network parameters. Y equal to Z inverse, T dash equal to T inverse and G equal to H inverse, vice versa. In any reciprocal network we can prove H12 हमेशा minus H21 होता है. Symmetrical में determinant 1 होता है. इसको याद करना चाहिए compulsory. ठीक है? If you remember the top part, bottom will be same. Right? Any queries? अभी भी बफर हो रहा है क्या? नो प्रॉब्लम महेश, कंटिन्यू. अभी सब ठीक है ना? कुछ दिक्कत है तो बताओ. एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन आस्क. नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइज करेगा. हो गया ना ऑलरेडी रिवाइज. दिस इज जेड ABCD H पैरामीटर्स. राइट साइड वाला V1 V2 डिपेंडेंट होता है. लेफ्ट साइड वाला V1 V2 डिपेंडेंट. राइट साइड तो इंडिपेंडेंट होता है. दिस इज द कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल. ट्रांसफर इम्पिडेंस कहते हैं Z12 इक्वल टू Z21 एंड हियर द रेसिप्रोकल कंडीशन AD माइनस BC इक्वल टू 1. सिमेट्रिकल A इक्वल टू D. For here H reciprocal is H12 minus H21, symmetrical determinant equal to 1. This is the relation between various Z parameters. Now try this question and solve this question. Give a try. You people can give a try and tell me the answer. Yeah, all relations we will do Himansh. Problems में करेगा. सारे parameters का एक से एक relation निकलेगा. ठीक है? Don't worry. चलो. आप लोग ट्राई करके ABCD में व्हाट इज योर राइट आंसर बताओ. Read. Give a reading and tell me the answer.
ऑप्शन सी का क्या 3 आंसर आया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी कमेंट करो। 3 ही आंसर आया मुझको। बाकी लोग माय डियर फ्रेंड्स कमेंट करो सारे लोग। ऑप्शन ए पे है सारे लोग, ऑप्शन बी पे है, सी पे है। सो 2 लोग महेश एंड संतान तो राइट आंसर दिया ऑप्शन ए। सो बाकी आंसर्स तो रॉन्ग है मेरा फ्रेंड्स, ठीक है। सो मैंने अंडरलाइन भी किया आपके लिए। इन ए टू पोर्ट रेसिप्रोकल नेटवर्क द रेशियो ऑफ ओपन सर्क्यूट आउटपुट वोल्टेज बाय द इनपुट करंट। ओपन सर्क्यूट आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या सर? I2 इक्वल टू 0 वाला कंडीशन में V2 बाय द इनपुट करंट। दिस रेशियो इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज गिवन बाय Z21। सर Z21 इक्वल टू Z12 होता है सर, क्योंकि एग्जामिनर दिया नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। सो हो गया सर आंसर। सर ये क्या है सर? Z and Y इनवर्स टू ईच अदर सर। So you should say Z21 is also equal to 1 by Y21. गलत है भाई, this is not a valid answer। क्योंकि Y21 क्या होता है सर? I2 by V1। Z21 क्या होता है सर? V2 by I1। दोनों सेम कैसा होता है सर? मैंने आपने बताया ना सर Z इक्वल टू Y इनवर्स, बताया पूरा मैट्रिक्स का इनवर्स, नॉट इंडिविजुअल पैरामीटर्स का इनवर्स। Z एंड Y आर इनवर्स टू ईच अदर इफ यू हैव इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस। पैरामीटर इंडिविजुअल नहीं, पूरा पूरा मैट्रिक्स। देखो आपका Y Z इनवर्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ Z का मतलब क्या सर? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ Z, Z22 माइनस Z12 माइनस Z21 Z11। ऐसा ले लिया तो Y21 क्या होता है सर? माइनस Z21 बाई दिस मच। इट इज नॉट सिंपली 1 बाई Z21, ठीक है। इज इट फाइन? क्लियर? टेल मी। ओके, सो ओनली राइट आंसर इज ए। इसमें ज़्यादा ट्रैप्स है, थोड़ा सा रॉन्ग किया तो ये आएगा, सी भी आएगा। सो व्हाट इज द राइट आंसर इज ए, ठीक है। चलो, थैंक यू। नाउ लिसन हियर, हमारा पास 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स है सर। ये 3 नेटवर्क्स क्या सर? वो 3 इंपॉर्टेंट टू पोर्ट नेटवर्क्स का पैरामीटर्स आपके पास याद पे है तो, आपका माइंड पे रजिस्टर हुआ तो, आपका मेमोरी पे स्टोर किया तो एडवांटेज क्या? सारे प्रॉब्लम्स आपको आसान से हो जाएगा। इसमें फर्स्ट वाला नेटवर्क क्या होता है सर? जेड नेटवर्क, टी नेटवर्क, टी नेटवर्क, टी नेटवर्क। यू शुड रिमेंबर द जेड पैरामीटर्स फॉर द टी नेटवर्क। व्हाट आर द जेड पैरामीटर्स यू शुड रिमेंबर। मैं तो प्रूफ दिया, आप लोग ट्राई करना चाहिए तो ट्राई कर सकते। सी हियर, this is the T network. What are the Z parameter equations sir? V1 V2 equal to Z11 I1 plus Z12 I2, Z21 I1 plus Z22 I2, ठीक है सर, हो गया। Then you should write the KVL in this loop. I1 is this current, I2 is this current, this is I1 plus I2. What is V1 is I1 into this plus I1 plus I2 into this. What is V2? I2 into this plus I1 plus I2 into this. If you manipulate these equations, finally you will get Z parameters as ZA plus ZC, 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 ZB plus ZC, where ZC is the shunt element, ZA, ZB are the series elements. Here you can observe ZA plus ZC, ZA plus ZC, 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 ZB plus ZC ना। Here Z12 equal to Z21, ये नेटवर्क तो हमेशा रेसिप्रोकल होता है। अगर if ZA, ZB सेम हुआ तो Z11, Z22 सेम होता है, उस केस में it will also become symmetrical. So T नेटवर्क आया तो शार्पली आपके पास आंसर आना चाहिए। T नेटवर्क का Z पैरामीटर्स क्या होता है सर? ZA प्लस ZC, 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 ZB प्लस ZC। नेक्स्ट, सिमिलरली आप पाई नेटवर्क ले सकते हैं, पाई का Y पैरामीटर्स निकल सकते हैं। यू कैन डू Y पैरामीटर्स बाय नोड एनालिसिस, नहीं है तो मेक V2 0, फाइंड I1 by V1, make V1 0, find I1 by V2, like that you can also do. Okay, leave it. Now if you want to find the Y parameters, listen here, you can try this by node analysis. After doing the all node analysis, minus I1 is entering, minus I1, V1 by, if it is impedance, V by Z, if it is admittance, V into Y, V1 minus V2 into Y,
equal to 0. Like that, if you solve it, finally we can prove y parameters is equal to, you should remember, I think it is missed, just a minute. Now it is visible now. Ya plus yc minus yc minus yc yb plus yc. Okay. So z parameters of the T network, Za plus Zc, 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 Zb plus Zc. For pi network, what are the y parameters? Ya plus yc minus yc minus yc yb plus yc. Here minus active. Minus का मतलब है here yc का मतलब क्या? y12. y12 is I1 by V2. It is not the voltage current ratio at the same point, na? It is at different points. So maybe due to the direction of the current, that will be minus. Okay. So that is about your T network and Y network. Just quickly revise. For T network, Z parameters is Za plus Zc, 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 Zb plus Zc. For pi network, Y parameters are Ya plus Yc, minus Yc, minus Yc, Yb plus Yc. Right. So please try these options and simple question, do the answer. Direct formula. Direct formula. Ya plus Yc minus Yc minus Yc, Yb plus Yc. Okay, give a try. Give a try. Give a try. Options comment करो. Option B. Okay. Yes, गौरव, ये तो मेरा काम है ना. I should remind your mistakes so that आपका एग्जाम पे वो मिस्टेक्स तो रिपीट नहीं हो जाएंगा. Okay. So what is the right option here? Most of the people have given the right answer as y equal to Ya plus Yc minus Yc minus Yc Yb plus Yc. ऐसा दिया wrong answer. Wrong answer भाई. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस किया आप लोग ने. इट इज ओम्स. ओम्स का मतलब जेड, वाई नहीं. जेड है ना, वाई कैसा निकालना? वाई कैसा निकल सकते? 1/20 प्लस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 1/5 प्लस 1/15. So that's why in this particular case none is the answer. Okay, so originally y parameters. Okay, if you want z parameters, you can find from y inverse or convert this pi into t and you can find. Any method is fine. Okay, so be careful. Right? So you should not commit this mistake also. You know, one gate paper, I think they have given this kind of question with this option. They have missed this option.
So sometimes there is a chance examiner can also commit mistake. Okay, so be careful here. It is not ZA plus ZC, YA plus YC. Okay, chalo next. Chalo. So determine the Z and Y parameters. Determine the Z and Y parameters. Listen here. This is not a completely T network, completely pi network. ये तो completely T network नहीं है सर, completely pi network भी नहीं है सर. इसको क्या कर सकते सर? कैसा चेंज कर सकते? सिंप्लीफाई कैसा करेगा सर? सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल मेथड, यू शुड कन्वर्ट this t into pi or this pi into t, whichever you feel happy you do that. सर मुझको पाई को टी में कन्वर्ट करना आसान है सर, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम वैल्यू है ना, इसका कन्वर्शन इजी होता है सर. बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर सेम वैल्यू, आई कैन कन्वर्ट इट इजीली. सो लिसन हियर, 3 3 3, it will become 1 1 1. So what is the final T equivalent of the network? It is 2 1 1. Then what are the Z parameters? ZA plus ZC, 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 ZB plus ZC. What are the Y parameters? Its inverse, that is 2 by 5. Bus. This is how you can find Z and Y parameters easily in the T and pi networks. Okay, next question. Next question. So this is the T network. Determine the Z and Y parameters. आप लोग you can say what are the Z parameters? ZA plus ZC. Here series element तो 0 ohms है ना, 0 plus ZP, 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 ZP. Okay, then what is the determinants are 0, ZP square minus ZP square. ठीक है, so this is 0. Then what are the Y parameters? Y parameters is nothing but Z inverse. Here when Z determinant is 0, Z inverse undefined. Y parameters undefined. So you cannot define here Y parameters. You can define only Z parameters. Okay, that is the question. So similar model, one more question. Same model, I am not doing this because I have already done that. It is like this network mein, it is like a pi network with ZS. YA equal to impedance infinity means admittance 0. Impedance infinity, admittance 0. Okay, what are the Y parameters? YA plus YC, minus YC, minus YC, YB plus YC. In this case, determinant of Y will become 0. इसका मतलब Y inverse define नहीं होता है. That is, इस केस में Y possible, Z not possible. इस केस में Z possible, Y not possible. Right? Let's do this question now. Just a minute. Right. Let me do this question. Thank you Anubhav and Siddharth, both of you. Right. चलो भाई, ये तो मेरा टी नेटवर्क है. टी नेटवर्क का H पैरामीटर निकालना. टी नेटवर्क का Z पैरामीटर निकल सकते सर. Z इक्वल टू व्हाट इज दैट सर, मुझको पता है ना, ZA प्लस ZC माइनस ZC माइनस ZC ZB प्लस ZC. ऐसा Z पैरामीटर निकल सकते सर. हाउ टू फाइंड H12? How to find H12? Let me explain here. If you take the H parameter equation V1 and I2, H11 I1 plus H12 V2, H21 I1 plus H22 V2,
आपका H12 क्या होता है सर बताओ? H12 इक्वल टू इस इक्वेशन से, ये तो V1 बाई V2 होता है सर, कब सर? I1 इक्वल टू 0 समय पे। मेरा I1 0 होना समय पे V1 बाई V2 क्या होता है सर? H12। दैट इज हियर if you make I1 equal to 0, if you make I1 equal to 0, you know, when the current through the passive element is 0, voltage at both the ends is same. So here also I will get V1 only. V1 only. So now please listen here. This is I1 0, this is also I2. These two are in series. You can apply voltage division principle. Can you tell me what is V1? Total into that particular resistance by total resistance, you will get V1 by V2 equal to 1 by 2. That's H12 for you. This is one method. Otherwise, another method is H12 equal to minus H21, because it is a resistive or reciprocal network. You can try at home this method, you will get the same answer. You try at home. Make V2 0, find I2 I1 ratio. Just make this short and apply KCL and you will get the answer. Okay, so that also you can try. Next sir, is there any other simple shortcut है सर? इसको करने के लिए थोड़ा सा सिंपल शॉर्टकट बताओ। आपको टी नेटवर्क दिया तो जेड पैरामीटर पता है। जेड पैरामीटर क्या होता है सर? Z1 ZA प्लस ZC 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 ZB प्लस ZC 1 प्लस 1 1 1 2 1 प्लस 1, ठीक है। बट H को कैसा निकल सकते सर Z से? सिंपल बात है, सिंपल सी बात है। हमारा H क्या होता है सर? H क्या होता है? V1 I2 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन इतना आसान होता है अभी। H12 इक्वल टू, इक्वेशन देखो, H12 इक्वल टू क्या सर? V1 बाई V2 एट I1 इक्वल टू 0। यही तक हमको पता, प्रॉब्लम इतना आसान है। इस वाला इक्वेशन में I1 को 0 करो, V1 बाई V2 क्या होता है सर? I2 बाई 2I2। हो गया काम। So you know one parameter, you can find any other parameter of your wish, just manipulate the equation. Actually we can prove H12 equal to V1 by I1, sorry V1 by I2, V2 by I2 at I1 0. By using this relation you can say Z12 by Z22, but इतना सारे relation याद करना क्यों? टाइम वेस्ट करेगा। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द रिलेशन, आपको आंसर आएगा। एग्जामिनर ऐसा रिलेशन दिया तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपको बेसिक फार्मूला पता है ना। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द H12 फ्रॉम द Z पैरामीटर्स। ठीक है, इज इट फाइन? राइट, चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू obtain ऑल द पैरामीटर्स फ्रॉम वन पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल इस वाला क्वेश्चन पे मेरा पास जेड पैरामीटर है, जेड पैरामीटर को यूज करके सारे पैरामीटर्स कैसा निकल सकते हैं। मेरा पास जेड पैरामीटर है ना, जेड पैरामीटर को यूज करके सारे पैरामीटर्स निकल करना चाहिए। ठीक है, चलो। somebody asked me in the starting ना, sir how to find one parameter from another parameter, इसको try करो। now listen here, I will give you one easiest way to do it। suppose you know the z parameter का equation क्या सर? v1 v2 equal to za plus zc 2i1 plus i2 i1 plus 2i2। okay fine sir, what about the t parameters sir? t parameters चाहिए मुझको। I have z, I want t। very simple, first you take same story for anywhere from equation 2। what is your equation 2 from the z parameters?
V2 इक्वल टू I1 प्लस 2I2 ना. सो थोड़ा सा मैनिपुलेट करो इसको, ये 2I2 लेके इस साइड रखो. सो आपका I1 क्या होता है सर? V2 माइनस 2I2. ठीक है सर, ये एक अच्छी सी काम हो गया. हो गया ना, अच्छी से काम हो गया. क्या हो गया सर? C आया मेरा, C कितना 1, D कितना 2, नॉट माइनस 2 बिकॉज माइनस इज इन द इक्वेशन इटसेल्फ. ये आपका C एंड D आया. और क्या चाहिए? सब्स्टिट्यूट. आपको I1 आया ना, इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट इक्वेशन पे. सो व्हाट इज योर V1? 2 टाइम्स I1, that is V2 minus 2I2 plus I2. So 2V2 minus 4I2 plus I2 is minus 3I2. ये आपका V1 है. ठीक है. सो ये दोनों कंपेयर करो, आपको मिला ये और B. बस आपका ABCD पैरामीटर्स 2 स्टेप पे आया. You see it is also symmetrical and reciprocal because it is originally symmetrical and reciprocal. Inverse T चाहिए तो इसका inverse निकालो. ओके, समझ हो गया ना? प्रोसेस सिंपल है. सेकंड वाला इक्वेशन निकालो, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, जो आया उसको लेके फर्स्ट इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आएगा. ठीक है. Same way you can find H parameters also. Same. From the equation 2 से V2 equal to I1 plus 2I2. आपका 2I2 क्या होता है सर? माइनस I1 प्लस V2. I2 क्या होता है सर? माइनस 1/2 I1 प्लस 1/2 V2. ठीक है. चलो H21 कंपेयर करो. ये क्या होता है सर? H21. ये क्या होता है सर? H22. नाउ सब्स्टिट्यूट I2 इन द इक्वेशन 1. ठीक है. आपका V1 इक्वल टू 2I1 प्लस I2. व्हाट इज द I2? I2 क्या होता है? माइनस 1/2 I1 प्लस 1/2 V2. 3/2 I1 प्लस 1/2 V2. Compare this with this. It is equal to H11, H12. Okay. So what are the H parameters? What are the inverse of this matrix will give you G parameters. Here H12 equal to minus H21 and determinant is equal to 1. ठीक है. बस. So if you know one parameters, this is how you find any other parameters. ठीक है. Is it fine? Comment करो, आगे चलेगा. Very good. So let's do the next question. Give a try for this question. इसके लैटिस नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करेगा. पहले ये क्वेश्चन करेगा. Read this question. Thank you, Mahesh.
So please try to answer this question. Give a try, give a try. Listen, which of the following parameters are zero? ठीक है, चलो इसमें इनपुट में क्या है सर? करंट. ओपन सर्क्यूट है ना, जीरो. आउटपुट में वोल्टेज. ओके, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? जीरो. इनपुट में करंट जीरो, आउटपुट में वोल्टेज जीरो. ओके, फाइन. So these two are the dependent variables of which parameters? I1, V2 are the dependent variables of G parameters. Na 0 times you can write V1 plus 0 times V1 plus 0 times. So what is the manipulation you will get? G parameters is equal to 0. Okay, so G parameters of the network will be equal to 0. Right, next. We'll do this later. Read this question and answer this question. Read this question and give your answer, guys. The network shown in the figure is क्या होता है? Reciprocal, non-reciprocal. ऐसा comment करो, try करो पहले. Give a reading and give your answer. Just okay. Give a reading and tell your answer. Tell me, is this network reciprocal or non-reciprocal, symmetrical or asymmetrical? Is this network reciprocal or non-reciprocal, symmetrical or asymmetrical? It's an active network, sir. इसमें dependent source है sir. Non-reciprocal. Not looking same, sir. इसका मतलब asymmetrical. Wrong answer. ये तो sufficient conditions है भाई, not necessary conditions. ये क्या होता है sir? Sufficient but not necessary conditions. So let's do it. This is the network given by examiner. ये वाला network तो examiner दिया. Right, so now let's find any parameters of your wish. Z parameter, Y parameter, क्यों चाहिए वो parameter चाहिए तो वो parameter, जो parameter आपको चाहिए जो निकालो. So let's apply nodal analysis at the node V1. Entering current कितना सर? I1. V1 by resistance 1. Entering current कितना सर? minus V2 plus V1 minus V1, that is plus V1 minus V2 by resistance कितना सर? 1 equal to 0. So मेरा I1 कितना होता है सर? 3V1 minus 2V2. ठीक है सर, एक इक्वेशन निकाला.
सिमिलरली आप अप्लाई करो नोडल एनालिसिस एट द सेकेंड नोड, ठीक है। सो V2 माइनस V1 माइनस V1 बाई रेसिस्टेंस, ये तो मैं डिज़ाइन किया ये वाला सर्क्यूट, V2 माइनस V1 माइनस V1 बाई 1 प्लस V2 by 1 by 2 equal to, sorry, and I2 is entering now, minus I2 equal to 0. So what is your I2? Minus 2V1, it is 2V2 plus V2 na, 3V2. So you can see these two equations. What are the Y parameters? It is 3, minus 2, minus 2 and 3. 3, minus 2 and 3. Okay. So you can, now you tell me y11 equal to y22 sir. इसका मतलब सिमेट्रिकल. y12 equal to y21 सर, इसका मतलब क्या होता है सर? रेसिप्रोकल. So you cannot judge the network by seeing the network directly. आप लोग पैरामीटर्स निकल करके इसके बाद बताना चाहिए. So the what is the right answer is, it is reciprocal and symmetrical. Okay, don't, no guesswork please. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. और कुछ क्वेश्चन है, ठीक है. नेक्स्ट, इसको कहते हैं लैटिस नेटवर्क. सो रीड द क्वेश्चन. डिटरमाइन द Z पैरामीटर्स ऑफ द नेटवर्क. ठीक है. सो इसमें दो पार्ट है टू पोर्ट नेटवर्क्स में. एक तो नॉर्मल अभी जो डिस्कस कर रहा है ये वाला पार्ट, इसके बाद एक और पार्ट भी है. क्या सर? इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क. दैट इज टू पोर्ट नेटवर्क्स मेरा पास है, तो वो दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, कैस्केड में कनेक्ट करना चाहिए. अलग अलग केसेस में हाउ इट विल वर्क, वो क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स. ठीक है. चलो नाउ लेट्स डू दिस. This is the lattice network. V1, V2, I1, I2. We need to find the, determine the Z parameters. You need to determine Z parameters of the network. See here, simple question. So it's not neither T network nor a pi network. It's called lattice network. ठीक है. So you know the Z parameter equations. आपको Z parameter equations तो पता है. So अगर आपका I2 0 किया तो V1 by I1 Z11 होता है, V2 by I1 Z21 होता है सर. ठीक है सर. I2 को 0 करेगा सर, पहले तुरंत I2 को 0 कर गया, किया. ओके. अगर I2 को 0 किया तो सम करंट ऐसा आ रहा है सर, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है. इसमें करंट 0 है तो सेम करंट इसमें भी चलेगा ना. इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है सर. सिमिलरली ये वाला करंट से ऐसा आ रहा है, ये करंट तो 0 है तो सेम करंट इसमें भी चलेगा. ये दोनों एलिमेंट्स भी सीरीज में है सर. ठीक है सर, हो गया. अभी देखो, अभी लिसन हियर. हाउ टू रीड्रॉ द नेटवर्क इज, मेरा पास 1, ठीक है, 1 के साथ क्या 3, next 3, one. ठीक है. 1 and 3, 3 and 1. Now here you have your V1, I1. ध्यान से सुनो. V2 डाउट आए तो ABCD ले लो. ठीक है. 1 और 3 का बीच में पॉजिटिव ले लो, 3 और 1 का बीच में नेगेटिव ले लो. ये आपका V2 होता है.
ठीक है सर, अच्छी बात है। सो नाउ Z11 निकलेगा सर। Z11 क्या होता है सर? इट इज V1/I1 सर। V1/I1 क्या होता है सर? 4 पैरेलल विथ 4, 4 पैरेलल विथ 4, 2 होता है सर। देन Z21 क्या होता है सर? इट इज V2/1। नाउ लिसन, ये तो 4 है ना, करंट डिवाइड करेगा I1/2 I1/2, क्योंकि दोनों इम्पिडेंसेस इक्वल है तो करंट डिवाइड्स इक्वली। ये कितना होता है सर? 3I1/2, ये I1/2। नाउ इस लूप में KVL अप्लाई करो। सो आप लोग KVL अप्लाई किया तो नेगेटिव टू पॉजिटिव 3I1 कब से ऑडिबल नहीं है? नाउ इट इज ऑडिबल। ओके, नाउ इट इज ऑडिबल। सो मैं रिपीट करेगा, डोंट वरी। आवाज नहीं आ रही कहा किस्सा भाई, 2 मिनट हो गया ना, सो मे बी दिस प्रॉब्लम ओनली। ठीक है, चलो 1 मिनट। ये वाला क्या कहते हैं सर? लैटिस नेटवर्क कहते हैं। मेरा Z पैरामीटर्स है सर, Z11 इज इक्वल टू V1/I1 व्हेन I2 0। Z21 क्या होता है सर? V2/I1 व्हेन I2 इक्वल टू 0। सो इस वाला नेटवर्क में मैंने क्या किया? I2 को 0 किया, I2 को 0 किया। I2 को 0 करने के बाद ऐसा कुछ करंट आएंगे तो ये करंट 0 है तो सेम करंट इसमें भी चलेगा। ये दोनों एलिमेंट कैसा है सर? सीरीज में है। सिमिलरली ये करंट 0 है तो दोनों एलिमेंट में सेम करंट चलेगा। सो ये दोनों एलिमेंट सीरीज में है सर। सो इफ यू redraw this network, 3 and 1 are in parallel, 1 and 3 are in parallel। 1 और 3 का बीच में पॉजिटिव है, 3 और 1 का बीच में नेगेटिव है सर। ठीक है, नाउ प्लीज लिसन। So if you have doubt, take mark A, B, C, D and do it, because it is 4 and 4, current divides equally. So what is Z11 is V1/I1. V1/I1 is this total impedance 4 parallel with 4, 2. What is this loop equation here? 3/2 I1 minus I1/2, it will give you 2 I1/2, I1 equal to V2, or what is V2/I1? 1. Because it is a symmetrical, looks the same from दोनों side, it is Z11 equal to Z22. It is also resistive reciprocal network, Z21 equal to Z12. अगर नहीं है तो you can do the same analysis by making I1 equal to 0 also, you will get the same answer. V2 equal to 0 कैसा हुआ? ब्रिज बैलेंस कैसा है सर? 1/3 is not equal to 3/1 my dear friend. If 1/3 equal to 1/3, ब्रिज बैलेंस होता है, V2 0 होता है। ओके गौरव?
चलो one more question we will do and we can end the class. एक मॉडल जो है ना, दिस मॉडल कल डिस्कस करेगा. Right, read this question. Determine the, बाकी क्वेश्चंस कल डिस्कस करेगा, ये वाला लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. Determine the Thevenin's equivalent of the network shown in the figure. Determine the Thevenin's equivalent of the network shown in the figure. ठीक है. Here network नहीं दिया, network का parameters दिया, इसको use करके we should make your network. That is the challenge. ठीक है. This is my network. These are the Z parameters. What you need to do is you should make a network which satisfy these parameters. इस वाला पैरामीटर सेटिस्फाई करने के लिए एक नेटवर्क हम बनाना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज मॉडलिंग ऑफ द नेटवर्क विथ रेस्पेक्ट टू टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स. यू कैन मॉडल ए नेटवर्क और यू कैन मेक ए नेटवर्क विच satisfy the equations of the Z parameters. You can make it for Y also, you can make it for H parameters, you can make it for G, but not for A, B, C, D. That is not possible to relate V1, I1 with V2, I2. So okay, come here. So let me make a network which satisfy this equation. क्या होता है सर? V1 equal to Z11 I1. Okay, this is my V1 for example. Okay, V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2. Z12 I2. Why you took dependent source sir? Why can't you take another impedance? No, because series में current हमेशा same होता है. If you take another impedance, it will give you Z12 into I1. But मुझको क्या चाहिए? Z12 into I2. इसलिए मैंने Z12 into I2 को एक dependent source से represent किया. Right. So this is satisfying your equation. V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2. And another I will take here same way Z21 I1 plus Z22 I2. V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2, V2 equal to Z22 I2 plus Z21 I1. ठीक है सर, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया. हियर क्या करेगा? आई विल कनेक्ट दिस ZS and VG. This is how you can make the network with respect to Z parameters. Why I took dependent source? Every single detail I have given. Now I need to find Thevenin's. Yes, you can find Thevenin's. I want to find the Thevenin's between AB. How to find Thevenin's between AB, sir? Make this current 0. Your V2 will be equal to VTH. Open circuit voltage is called VTH na. Now very simple. I2 0 hai to V2 is VTH. So what is VTH? Because I2 0 in this network, you get Z21 I1. Z21 I1. What is I1, sir? If I2 is 0, this is short circuit, then I1 equal to Vs by Zs plus Z11. That is I1 is Vs by Zs plus Z11 into Z21. Then similarly you can find ISC and ZTH. You can try this as a homework. कल का क्लास में हम डिस्कस करेगा ABCD पैरामीटर से कैसा व्हाट वी कॉल इम्प्लीमेंट फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एंड ऑल.
ठीक है, आप घर पे ट्राई करना चाहिए तो वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स, जी पैरामीटर्स से ऐसा नेटवर्क कैसा ड्रा करना, यू कैन ट्राई इट. इज इट फाइन? फिर आज का क्लास एंड करेगा. कुछ डाउट्स तो नहीं है ना? सो आज 9 PM हमको एक स्पेशल क्लास है, फ्री वाला स्पेशल क्लास. इसमें मैं PYQ सॉल्व करेगा 2020 और 2019 का, सो नेटवर्क्स का पार्ट में. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली कम. इट इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू. सो वेरी हैप्पी क्रिसमस ऑल ऑफ यू वंस अगेन. Right, so these are the marathon sessions going on this particular Sunday, guys, so don't miss it. So these are all top batches already going on for our plus students. So these are the batches taken by all of us, all top educators. So many batches are there in Unacademy. You can definitely, once you join, you are having the choice to join any batch of your wish. So this is about Unacademy Combat. It is going on next December 29th 6 PM. So last time it happened on December 16th, right? So to win the exciting prizes, please register here. You can use my coupon code. It is completely free for you. Just give a try. So आपको नोट्स मिलेगा, 2 दिन बाकी है ना, टुमारो और संडे के बाद मैं पूरा नोट्स भेजता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. शेयर हमारा फ्री इनिशिएटिव्स, आपको कोई भी जगह पे नहीं मिलेगा पूरा सब्जेक्ट का फ्री वीडियोस अदर देन आवर क्रिएट्रिक्स चैनल गाइस. सो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, शेयर विथ मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वी आर ऑलवेज देयर विथ यू टू हेल्प यू, टू टीच यू इन द and to guide you to reach your destination in the best possible way. Thank you very much guys. Love you all. Bye bye. Okay, achiever, I will try.